truth of the conclusion. It is called an unsound argument which is invalid. So has all true premises cannot guarantee the truth of the conclusion. Premise true है तो किंतु conclusion हमें guarantee नहीं करी पर ये false. यदि आप उनके hot distributed middle नहीं कि example करें जल्दी here देखो एटी केमिति undistributed middle खाली तो मेरे सोना लिखा नहीं all animals are mortal all animals are mortal ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ତମମାନେ ଲେଖିଲେ ଲେଖ ନ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛି all animals are mortal এটা দিটাଙ୍କ premise all animals are men are एटी कौन सी तीनटा both the premise the conclusion true but conclusion does not logically follow from the premise conclusion को कहले premises काहे कि ने एटी कोन हैला fallacy undistributed middle कैसे कि नहीं देखो एक कहां को डिस्ट्रीब्यूट करे mortal होची middle term डिस्ट्रीब्यूट हेलानी तो argument is invalid जदि middle term not distribute हेला invalid ही होला valid सेते बळे हम जतले premise और conclusion necessary follow करथु valid होथु ताले हमें तो कोन कहबो जदि सब गुडा का premise कोन ट्रू हेतिबो conclusion ट्रू हेतिबो ताले हमें तो कोन कहबो argument जदि valid हेतिबो ताको कहबो valid एटी कोन अछि argument कोन हे गला एटी जेतु middle term distribute हेलानी सेते पे हमें invalid पहिले argument invalid हेला middle term distribute हेनी माने argument invalid हेला the truth of the premise and validity of argument determine whether the argument sound or unsound एटी हमें कोन करे determine करि परिबनी कोन sound ki unsound if the argument is valid and its premise are all true then eta kon eta the argument is valid and premise all are true then it is called sound otherwise unsound au chaha ebo jodi argument valid न हेतिबो conclusion true हे नथिबो कि premise true हे नथिबो ताले त मैथमेटिक्स सेटा कम हेतिबो unsound जेते बळे premise true हेतिबो conclusion true हेतिबो argument मते valid थिबो सेते बळे कोन कहइबो sound argument sound और unsound clear then asma में truth पाखु हमें valid invalid चाहिए sound और unsound चाहिए हमें truth छाडी देतिए truth और validity truth पाखु पास तमे नॉर्मली truth कहले कोन बुझ मते सत्यता करेक्ट सेई ट्रूथ होची दुई प्रकार ट्रूथ होची केते प्रकार रो दुई प्रकार ट्रूथ होची टू टाइप्स ट्रूथ टू टाइप्स कोन बटे ओटा होची फॉर्मल ट्रूथ आगते होची मटेरियल गोटे होची फॉर्मल ट्रूथ आ गोटे मटेरियल ट्रूथ तो एबे हम पढिबा फॉर्मल एंड मटेरियल ट्रूथ हमें एटे हेडिंग करतो फॉर्मल एंड मटेरियल ट्रूथ फॉर्मल एंड मटेरियल Last time the formal truth. So formal truth. By formal truth, we mean self-contradictory. So self-contradiction. By self-contradiction among
among thought themselves, among thought themselves. लिखला फॉर्मल ट्रूथ माने होची फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन कोन होची होची सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन जते बेले न करतबो ताको हमें कोन कहबा फॉर्मल ट्रूथ बोली कहबा जेमिति कि कोन हेतु सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन माने कोन एका समय रे दुईटा काम हे पाइबा जदी हमें कहबा एई रूम ता कोन द कलर ऑफ द रूम एज व्हाइट एटा होची कोन व्हाइट एज वेल एज द कलर ऑफ द रूम पिंक हमें एका समय रे कोन कहली व्हाइट एवं पिंक सेटा कहले कॉन्ट्राडिक्टरी कला एका समय मु जति एबे तुमको कहबे तमे वर्तमान लॉजिक क्लास रे छ सेपटे केमिस्ट्री क्लास होची तमे केमिस्ट्री क्लास रे छ तो तमे हे परिबो केटा एटा को होची सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन सेति पई कोन होची एका समय रे जति डेटा का मान हे परिबो सेटा को हमें कहबो कोन मटेरियल ट्रूथ आउ फॉर्मल ट्रूथ नॉर्मली हमें कोन कहि परिबो जोटा ही वर्ल्ड रे एक्जिस्ट करूथबो ताको हमें कोन कहबो जहारो एक्जिस्ट थिबो ताको हमें कहबो फॉर्मल ट्रूथ जहारो एक्जिस्ट कोन कहबो जति कॉन्ट्राडिक्शन कथा कहूची सेटा होची फॉर्मल ट्रूथ नै केमिति जति हैड्स वन कथा कहबा सॉरी तर गोल्डन माउंटेन कथा कहबा एटा कोन हमें गोल्डन माउंटेन हम माइंड रे अछि हम थॉट रे अछि गोल्डन माउंटेन हमें सेटा को केमिति एक्सप्रेस करि परिबा हमें केमिति जानि परुचंती गोल्ड और माउंटेन हमें माउंटेन देखछंती गोल्ड देखछंती सेटा कोन एक्चुअली वर्ल्ड रे अछि सेति पई एटा होची फॉर्मल ट्रूथ जहार कोन तो फॉर्म थिबो सेटा को हमें फॉर्मल ट्रूथ कहबा एटी अछि कोन बाय फॉर्मल ट्रूथ वी मीन सेल्फ कंसिस्टेंसी इन ए थॉट और आइडिया सेटा को सेल्फ कंसिस्टेंसी हेतु हमर थॉट और आइडिया सिकोच the truth or the falsity of the such and self evidence no correspondence with the word of fact ना इतना correspondence करू नथिबा ताको word of fact जहार केवल से हम माइंड रे एक्जिस्ट करथबो किंतु तो ए वर्ल्ड रे किछ बना से केवल गोटिए हेतबो जहार इस सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नथिबो केमिति जेमिति कि हमें कहले किछ भाबु चंदी माइंड रे जेमिति कि हेड्स ऑन गोल्डन माउंटेन माइंड रे भाबु चंदी तार किछ सेकंड ये अल्टरनेटिव नथिबो ताहले सेटा होछ कोन गोटे फॉर्मल गोल्डन माउंटेन अछि कि वर्ल्ड रे एक्जिस्ट अछि तो कोन अछि जहार वर्ल्ड रे करेस्पोंडेंस नथिबो करेस्पोंडेंस कोन नथिबो किछ फैक्ट्स तो कोन से चिन्ह सहित ताको हमें कोन कहबो फॉर्मली ट्रू बोली सेटा केवल कोठी एक्जिस्ट करतबो हम आइडिया रे हम माइंड रे सेटा को हमें कहबो फॉर्मल ट्रूथ बोली तर एग्जांपल तमे दे पारि पहेटी हैट्स ऑन गोल्डन माउंटेन एवडा सब फॉर्मल ट्रू बोली ठीक है गोल्डन माउंटेन हैट्स ऑन जा सब कोन हेतु हम थॉट रे एक्जिस्ट करतबो then as by material truth एटा बुझिले कि फॉर्मल ट्रूथ कोन हेतु जहार किछि से कहू तो फॉर्मली ट्रू मींस रूल को फॉलो करूतबो इट शुड सेल्फ कंसिस्टेंसी एग्जांपल हैट्स ऑन कोन उड़न तक घोड़ा जो कहते हैट्स ऑन गोल्डन माउंटेन यूनिकॉर्न एगुडा के सब कोन गोटे गोटे फॉर्मल ट्रूथ ये मीन सेल्फ कंसिस्टेंसी माने निजे केवल निज कथा कहूतबो आउ से सेकंड चांस का को करेस्पोंडेंस करतो जदि करेस्पोंडेंस करू छी बा कॉन्ट्राडिक्टरी कथा कहू छी सेटा फॉर्मल ट्रू को सेटा की ट्रू मटेरियल एले को मटेरियल माने से ता ऑपोजिट देची एटा को फॉर्मल ट्रू को छी एटा मटेरियल देखो बाय मटेरियल ट्रूथ वी मीन correspondence of thought or idea correspondence thought or idea to the world of fact of the world of fact an idea to the world of fact if the thought corresponds if the thought corresponds to the actually fact of experience
to the actually fact of experience. To the actually fact of experience. Then such, বুঝি পারছো? Then such thought are material truth. कौन कहले? जहार कौन थिबो? By material truth we mean correspondence of the thought or idea to the world of fact. Thought correspondence को actually fact करथिबो और experience करथिबो. Actually fact रे थिबो हम माइंड रे मध्ये exist करथिबो. सेटा को हमें कोन कहबा material truth. If the thought do not correspondence to the actually world of fact, they are material thoughts. तो करथिबो जदी सेटा कोन हेतिबो actually world रे नथिबो ताने हमें ताको कोन कहबा material false. तो एटी भी if the thought do not correspondence to the actually world of fact, if the thought material truth का लिख लो, then if the thought do not correspond to the actually world, do not correspond to the actually world of fact, if only you know actually world of fact, then they are material false. Author starting ro rakhi if the thought do not correspond to the actually world of fact, then they are material false. Example, say the idea of golden mountain, the flying horse, etc. are material false. The idea of golden mountain, flying horse are material false. एगुडा ताले कोन मटेरियल फॉल्स ले सेटे कोन एबे कहली फॉर्मली ट्रूथ एटे केवल करेस्पोंडेंस करूनी वर्ड सहित एगुडा हला मटेरियल फॉल्स किंतु कोन फॉर्मल ट्रूथ मटेरियल फॉल्स बुझि पाइलो तमे भाबुतु एटा ए कोन एथि एग्जांपल देछि टिके माइंड पास तुवा ना तो एबे बुझि पाइले ए कोन कहली एगुडा कहउछि मटेरियल फॉल्स रे एग्जांपल मटेरियल फॉल्स ले माने एटा कहार ट्रूथ फॉर्मल ट्रूथ कौन कहछि से कहछि सेल्फ कंसिस्टेंसी केवल निजे निजे को कहउ आउ फटो तार किछि भी क्रिएटिव माने किछि हम माइंड रे एग्जिस्ट करबो किंतु सेटा एक्चुअली वर्ल्ड रे एग्जिस्ट करू नथिबो आउ मटेरियल ट्रूथ होछि सेटा जोटा कोन हेतबो हम माइंड रे भी एग्जिस्ट करतु सेटा वर्ल्ड रे मध्य थिबो ताहेले हम तो कोन कहबो मटेरियल ट्रूथ केमिति धर हम गोटे भाबिले किछि गोटे धर golden mountain नहीं सेट पे सेट को फॉर्मल ट्रू पाइले सेट सेल्फ कंसिस्टेंसी सेट मटेरियल ट्रू वे मटेरियल फॉल्स जेमिति कि तमे एबे गुटे तर भाबिबो किसी गोल्ड तर भाबिलो तर गोल्ड नेकलेस कथा सेटा कोन तम माइंड रे भाबिलो सेटा एक्चुअली वर्ल्ड रे एग्जिस्ट करूची देन सेटा होची कोन मटेरियल ट्रू जहा तम माइंड रे भाबुतबो सेटा जति एक्चुअली वर्ल्ड रे माने ए पॉसिबल वर्ल्ड रे एग्जिस्ट करूतबो ताको हम कोन कहबो मटेरियल ट्रूथ कोन कहबो अदरवाइज मटेरियल फॉल्स जेमिति कि मटेरियल फॉल्स का एग्जांपल तुमको फास्ट कहली फॉर्मल ट्रूथ होची एआई गोल्डन माउंटेन काहे कि से सेल्फ कंसिस्टेंसी एटा किंतु कोन कहउची करेस्पोंडेंस करछि ताको एक्चुअली वर्ल्ड सेति पे एटा होची मटेरियल फॉल्स बुझि पाइले तो डेफिनेशन बुझिले कि नहीं देन आउ गोटे भी एटी लिख दियो सेही दियो like all men are mortal example all kings are men all men are mortal first name is all kings are men
therefore कौन हबो therefore all kings are मोटा लिखो मोटा देखो एटा कौन अछि all men are मोटा all kings are men all kings are मोटा following for the rule एटा कौन अछि rule को follow करे छी और जेतु गोटे फॉर्म रे अछि एटा को हमें कोन कहले फॉर्मली ट्रू इट इज आल्सो मटेरियल ट्रू काहे कि ये कोन करछि गोटे फैक्ट को करेस्पोंडेंस करछि सेति पय एटा कोन हैला गोटे फॉर्मल ट्रू जोटा हबो सेटा मटेरियल ट्रू काहे कि ना जेतु एटे को फॉलोइंग फॉर द रूल्स एटा रूल्स को फॉलो करै छी रूल्स को कोन तमारो रूल्स अछि मिडिल टर्म जो माइनर सॉरी मिडिल टर्म प्रेजेंट थिबो प्रेमिस में कंक्लूजन एब्सेंट थिबो जति रूल को फॉलो कला गोटे फॉर्म हिसाब रे रहता ताले तक कोन कहबो फॉर्मली ट्रूथ बोली कहबो और इट इज आल्सो मटेरियल ट्रूथ बिकॉज़ इट इज आल्सो फैक्ट एटा गोटे फैक्ट एटा गोटे फैक्ट सॉरी एटा गोटे फैक्ट कि नहीं को सेति पय कोन कहली एटा होची गोटे मटेरियल ट्रूथ बुझियला फॉर्मल ट्रूथ जोटा सेटा मटेरियल ट्रूथ तमे एठी देखाई छी माने बुक पेज नंबर 11 तमे सेटा टिके लास्ट को टिके पढि दो इट इज ऑल men are mortal all philosophers are men therefore all philosophers are mortal this above argument is both formally and material true on by this is the it is my formal true since the rule governing form and argument are obeyed it is also material true since all the three proposition involved in the argument agree the fact of existence and कि ये fact of existence को कौन करूची agreement करूची बा agree करूची तो सेति पई एटा होची formally true also material true बुझियला clear now किसी डाउट अछि कौन इज पढ़ले कौन पढ़ले sound validity clear पूरा एंटी के पढ़ले हो पढ़ा कि ना ठीक अछि हमें पूरा क्लास से पढ़ि तबा कोन अछि प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक हाउ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन सॉरी प्रॉपर्टी एग्जाम करो एग्जाम करो